Inheritance. In an object-oriented programming language such as Java, you can reuse and extend the functionalities and capabilities of an existing class in a new class if both the classes have similarities amongst themselves. A class can inherit the features of a related class and add new features as per the requirement. This allows the sharing and reuse of code and helps in making the code of an application more organized and efficient by reducing redundancy. Identifying the various types of inheritance. Java supports the following types of inheritance. First, single level inheritance. In single level inheritance, a single subclass derives the functionality of an existing superclass. The following figure explains the concept of single level inheritance. Person to employee. In the preceding figure, there are two classes, first person and second is employee. The class employee is the subclass that is inherited from the superclass person. यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो ये भी इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए पर्सन ये सुपर क्लास है, ये सब क्लास है। सब क्लास सुपर क्लास की वैरायटी और प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है। Second is multi-level inheritance. In this class, a subclass inherits the properties of another subclass. The following figure explains the concept of multi-level inheritance. Person to employee, employee to manager. In the preceding figure, the class person is a superclass for the class employee, and the class employee is a superclass of the class manager. You can include any number of levels in multi-level inheritance. यानी कि पर्सन की जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो एम्प्लॉय यूज़ कर सकता है और पर्सन और एम्प्लॉय दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो मैनेजर यूज़ कर सकता है। इसके पास अपनी प्रॉपर्टीज़ तो है ही, ये इसकी भी यूज़ कर सकता है और इसके पास अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं ही, ये इसकी और इसकी दोनों की यूज़ कर सकता है क्योंकि इसके पास इसकी भी वैरायटीज़ है और प्रॉपर्टीज़ है। ऐसे और आगे भी हो सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है यू कैन इंक्लूड एनी नंबर ऑफ लेवल्स इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। थर्ड है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इन हायरार्किकल इनहेरिटेंस वन और मोर सब क्लासेस आर डिराइव्ड फ्रॉम अ सिंगल सुपर क्लास। द फॉलोइंग फिगर शोज द कॉन्सेप्ट ऑफ हायरार्किकल इनहेरिटेंस। In the preceding figure, the subclasses employee and student inherit the properties of a single superclass person. यानी कि इस सब क्लास की भी एक ही सुपर क्लास है पर्सन और इस सब क्लास की भी वही सुपर क्लास है पर्सन। इसकी वैरायटीज ये भी यूज़ कर सकता है और ये भी यूज़ कर सकता है।